एक्चुअली में जाके फटाफट रेशियंस का यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, है क्या नहीं। हम्म, वो पहले सबसे पहले हम कहाँ जाएं और किसको बढ़ाने पे ध्यान दें। ये 80 होगी, ये 80 होगी, ये 80 और कर लेता हूँ मैं। तो टैलेंट पे जाते हैं यहाँ पे। आज नहीं खुलेगा, सैटरडे और संडे को खुलेगा, अभी कल भी नहीं खुलेगा मतलब। इंग्लिंग भी सेम में बजा पे मुझे लगता है। तो इसका भी डोमेन कुछ खास नहीं है अभी, लेकिन इसका भी ओपन नहीं है। भाई ये भी तो कलेक्ट नहीं होता है, इसको भी तो लेना पड़ता है। कायरो, कायरो है। एनिमो है ये तो। ये कहाँ मिलता है? Cold beer after a hard day's. चलो इसको भी देख लेते, निमट लेते हैं इससे भी। शार्लेट का यूज नहीं आएगा ना वहाँ पे। शार्लेट जगह लेते हैं। 80 पे तो यही है फिलहाल। Strike a pose! Time to shine! Scatter! Propagate! You're toast! Power that ended Python! हम्म, अच्छा सा दिन है। वेदर अटैक में ठीक है, क्रिट विद अटैक, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा है ये। ठीक है, बहुत टाइम बाद मुझे कुछ अच्छा मिला। 3 स्टार से हमें मतलब ही नहीं है। ये क्या दे रहा है भाई साहब? ये भी 3 स्टार, एटलीस्ट 4 स्टार देता है भाई। अच्छा, ये उसकी अल्टी का असर होगा, है ना? जरूर लगा भी कुछ ऐसा था। चलो अब जल्दी जल्दी स्टोरी कंप्लीट करेंगे। कायरो, एक और कायरो का है यहाँ पे। कहाँ पे हो भैया आप? इसका अलग। ये क्या इंडिकेट करता है जब भी आता हूँ?
आना साले। Strike a pop. Propagate! Boba, get them. Someone help me. I'm the frying pan. The show begins. Ah, let the world collide. Propagate! Scatter! Boba, get them. How brilliant! ऐसे नहीं मार पाऊंगा लेकिन ठीक है मार तो दूंगा। Scatter! Nice and spicy. Not bad. May I Not bad. To ashes! Propagate! Ah, let my name echo in song! Germinate! Boba, get them! Scatter! Let the world collide! How dare you! Strike a pop! Scatter! अरे वैसे मरा मैं तो, अरे मैं तो भूल ही गया इसको। Hey! Boba, get them! Let my name echo in song! Eyes on me! I'm the frying pan. Scatter! You're toast! Boba, get them!
अरे यार Out of the frying pan. Propagate! The show be. Ah, Scatter! nice and spicy. Ha! Ha! Boba, get them! Spring forth! इसको मारने में ज्यादा टाइम लगा भाई। हाँ शिट, क्या दिया इसने मेरे को? एचपी घटिया, ये तो किसी काम की नहीं है, ये तो कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन ये इसने मेरे को क्या दे दिया? थोड़ा ढंग का देना चाहिए था ना। और इसने ये लिखा हुआ है। मेरी भाई दूँ एक फ्लावर भी तो आया था, 3 स्टार नहीं 4 स्टार फ्लावर भी आया था। क्या गया? एचपी डैमेज नहीं, आज 4 स्टार आया था यार, फेजर हो गया था। ये वाला होगा अटैक विद क्रिट रेट है, विद क्रिट डैमेज एक्साइल वाला। ये तो ये लग रहा है, अभी मैंने क्या दे रखा है? क्रिट डैमेज विद क्रिट रेट दे रखा है। और इसमें मेरे को क्या मिल रहा है? क्रिट रेट 2.5, एनर्जी रिचार्ज, अटैक। अगर मैं इसको एनहांस करूँ तो क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, क्रिट नॉर्मल अटैक परसेंटेज। एचपी दिया मालिक। अभी कौन सा देता? ब्लैक वाला दे रहा है ना। 38 हो गया।
851 3871 851 3871 851 3871 851 May I present? Let the world come alive! At the frying pan, Propagate! nice and spicy. Power that ended Python. Strike a pose. Scatter! अरे विंडो टाइप साले विद हाइड्रो देखूं क्या मैं माउंटेन में जाना ये तो Water jet! ये अच्छा भी है यहाँ स्कॉल्ट भी हेलो नवाब भाई कैसे हो बस बढ़िया है भाई ईशान भाई बढ़िया है इसका डेंड्रो एलिमेंट देख रहा हूँ कैसा है Go! At the frying pan, Water jet! कि बस्ट तैयार करके चेक करना है मुझे कैसी
this an answer from this world? वहाँ पे देख लेते हैं। The show begins. इतना सारे ऑप्टिमाइजेशन होगा, कैरेक्टर लेवल अप, वेपन लेवल अप, आर्टिफैक्ट लेवल अप बहुत इजी कर दिया है। अच्छा, इजी कर दिया है। अब मैं समझा नहीं, पहले वो ज़्यादा मुश्किल था मतलब। पहले ही नहीं था क्या? ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे तू रुक रहे। हाँ रुक गया। दिख भी तो नहीं रहा मुझे कहाँ से लाना है। अच्छा यहीं पे है ट्री पे। अच्छा एक और है क्या? अबे तेरी, ये क्या मुसीबत है यार। अरे लिया ही नहीं। Nice. I'm starting to lose count. भाई कितने दे हो पिक्के भाई। अरे अब, अच्छा फूरीना के साथ करो ना, उसके बाद दोनों मोड है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका ऑलरेडी लेवल है। मेरे को तो ट्रेवलर की बस देखनी है एक बार, हाइड्रो आइकर में कैसी है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब बाय द वे बागदेश्वर जी। Bombs away! अब क्या भैया, क्रिएट तो कर दिया तुमने, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। Oh, brilliant! Water jet! Kota, get them! कांदा मूली ले लो भाई यहाँ पे। वाह भाई, ये तो थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को, है ना? विलन की तरह ही साउंड आ रहा है। Into the fire! तेरी भैंस की, तू था क्या अंदर? वापिस डेंटो बना देते हैं क्योंकि मेरे पास डेंटो है ही नहीं। शेष देख तो लो।
क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम के 16 घंटे तक रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, करता हूँ मैं वो। ये चाहिए मेरे को। ये 3 से 1 बनेगा ना? 1 है ऑलरेडी। कितने चाहिए? 6 चाहिए आई थिंक। 5 चाहिए। 5 में से 3 और बन जाएंगे। 4 हो गए। 4। ये वाला भी 1 चाहिए रहेगा, तब जाके वो 5 बनेगा। मतलब 1 को मारना ही पड़ेगा। इसको तो नहीं मार रहा। यहाँ पे था ना एक और। बॉस मारने में हेल्प कर सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल पे तो मार ही सकती। मेरे को तो डोमेन में आती है दिक्कत। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। सॉर्ट आउट समथिंग। तुम्हारी रिक्वेस्ट है क्या? ये पहले बताओ तो सही। Strike a pose. But mine ain't Eyes on me! You're toast. Scatter! ये हो गया खत्म। हाँ, बोर हो रहा है। भेजा था। अच्छा, बोर हो रहे थे इसलिए भेजा। अब जाके मिला फिर मेरे को ढंग का है क्या ये? क्रिट रेंज डैमेज डिफेंस इंक्रीज बाय। ठीक ठाक कहूंगा मैं। एक्चुअली अच्छा है ये, काफी अच्छा है। मेरे पास जो है उससे तो अच्छा ही है। अम्म, चलो एक डायरेक्ट ही मिल गया मेरे को, और छोटे छोटे 2 बच्चे भी मिल गए। किंग हेलो। अच्छा है, बस क्रिट रोल हो जाए। अच्छा। हेलो किंग। तुम्हारा आईडी लॉगिन किया था मैंने, लेकिन पता नहीं किसने लॉगिन किया, फिर मैं हट गया। Showering with praise. फिर अब मैं इधर आ गया, स्टोरी करूँगा अब। तो करना आया था मैं। The neighboring nation of Lua has बनाना आता है। ऑलरेडी कितना है? 2 और 3 5। ये हो गया। अच्छा, हेलो न्यू टू स्ट्रीम, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब ब्रदर। 4 स्टार को मत Truly is fascinating. देखना, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आर्टिफैक्ट की अभी नहीं है तो काम चलाने के लिए फिलहाल। मैं क्या देख रहा था? एट्रीब्यूट, हाँ। अरे यार, ये इनका टका बॉस। इसे कलेक्ट करने के लिए फिर रेशंस लगे हैं यार, हद है। अबे बाकी सब कितने सिंपल है कि इसको किसी को भी अपग्रेड मारने के लिए बस एक ही बॉस को मारना पड़ता है। बाकी जो चीज़ है ये ग्राउंड में मिल जाती है। शायद ये नहीं मिलती होगी, लेकिन ग्राउंड में मिल ही जाती है। मतलब विदाउट रेशन मिल ही जाती है। वो एक साथ दोनों चीज़ें कलेक्ट हो जाती है। इसका भी ऐसा ही सीन है। एक स्टोन क्राफ्ट करो, बाकी ये तुम्हें ग्राउंड में मिलेगी। इसका अलग ही है भाई लेवल। इसको भी रेजिन से यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए भी रेजिन, बस इसके लिए नहीं लग रही बस।
आईडी ओपन करी क्या अभी? हाँ, कह तो रहा हूँ मैंने आईडी ओपन करके देखी रेसिंग्स वगैरह यूज करने के लिए, वो तुमने बता रखा था जो, फिर मैंने की तुम ऑनलाइन हो, Boring. Isn't there anything फिर मैंने else लॉग more आउट कर दी, मैंने अपनी interesting खोल ली, ऐसा हुआ। to do? The show begins. हेलो Ad केत। हाँ, Come take a look. यह आपका अकाउंट है क्या? हाँ, ये मेरा ही अकाउंट है। आई एम न्यू, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ बोलूँगा मैं, न्यू भी नहीं। ये गेम में ऑलमोस्ट सारे के लिए रेसिंग चाहिए। अच्छा, मतलब इतना, थोड़ा सा रेसिंग को थोड़ा सा और इजी करना चाहिए ना यार। मतलब 160 तो नहीं यार, मतलब 220 240 के आसपास जो भी है राउंड फिगर में, मतलब वो है कि 4-5 बार से ज़्यादा यूज़ हो सके। 1 मंथ से फाउंटेन क्वेस्ट पे पहुंच गए। अरे वो तो बीच में अभी थोड़ा सा 1-2 दिन ढंग से खेला नहीं मैं, कुछ आर्टिफैक्ट के चक्कर में रख गया। आर, आर, Now for a little less आर्टिफैक्ट के action. चक्कर में नहीं, सॉरी, स्टोन चंक के चक्कर में, This is the life. लेवल अप के चक्कर में। Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day. We're supposed to leave the अब fortress सबसे of पहले तो Genshin. बस Come on. We gotta 120 था, complete the release procedures बाद now. में 160 किया था। मैं ना प्रॉपर पूरी स्टोरी फॉलो कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत से जब से खेलने लगा हूँ। मजा भी आ रहा है। अब बस ये है कि अगर मैं भी अर्ली गेम प्ले होता तो फिर वो होता ना मेरा सीन कि थोड़ा सा खेला, फिर 1-1.5 महीने का वेट करा, फिर थोड़ा सा खेला, फिर 1-1.5 महीने का वेट करा, फिर स्टोरी की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। Please sign here. This document will be effective स्टोरी immediately कुछ नहीं, upon अभी signing, आर्कन कर रहा and हूँ you बस, two may exit the fortress इसके clearly बाद स्टोरी per देखूंगा। स्टोरी regulations. कुछ चल रहा है, It's been so long since we've been to the surface. कुछ चल रही है, सारी नहीं। वंडरर तक की मैंने शायद, हाँ स्टोरी, हाँ वंडरर। What's happening? उनका स्टार रेल में 240 रेजिन दिया है, लेकिन गेंशिन में नहीं दिए। यार ये क्या बात होती है? गेंशिन के स्टोरी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आर्कन क्वेस्ट करने के लिए बहुत लंबे हैं। अच्छा, बाप रे, स्टोरी तो मेरे को मानना पड़ेगी, बहुत लंबी और बहुत सारी है भाई। आर्कन तो फिर भी ठीक है। आर यू ओके? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. भाई इसमें भी देना चाहिए यार, होंकाई जैसे दे रहे हैं तो कुछ हिरेशिन तक तो यार देना तो चाहिए यार। मेरा कंसर्न है कि देना चाहिए। बाकी डायरेक्टर साहब ही थे, वापिस जायजली के पास जा रहे हैं हम। अब इससे क्या बात करनी है? इमोजेंस कितने हैं? है अभी आपके पास? ज्यादा नहीं होंगे यार, 1200 है कन्वर्ट करने के बाद।
कन्वर्ट कर लिए कुछ विशेष में, उसके बाद अच्छा किंग देख रहा है तो बता दूंगा, 2 दिन से लगातार कंटिन्यू कर रहा हूँ उसके, रेसिन भी यूज कर रहा हूँ, डेली मिशन भी कर रहा था, Ah, good to see you two. मतलब 2 दिन Is से there नहीं, something you wish to see me about? शायद 4-5 दिन, Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. लास्ट टाइम भी The तो। tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? अरे If you recall एक our सेकेंड, last मैं इधर incident, if there कन्वर्सेशन really पढ़ रहा were a हूँ। problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे प्रिमोजेंस मिल रहे हैं, क्यों वेस्ट करूं, बिकॉज नेक्स्ट पेज में सिर्फ 56 विशेस जितने प्रिमोजेम्स मिलेंगे, ओनली सारे पेज से कम और है बहुत, 56 विशेस भी कम लग रही है। अच्छा पेज में, पूरे पेज में, या थैंक्स, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिजी था जरा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ कुछ अच्छा आर्टिफैक्ट भी निकले, कुछ बेकार निकले, ज्यादातर एक एक दो निकले थे अच्छे। फिर मुझे कितना, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब बाय द वे। हाँ मैं क्या पढ़ा था स्टोरी, हाँ रुको, हाँ और लास्ट इंसिडेंट प्रॉब्लम विद राइट अबाउट इट, अच्छा उस बारे में बात हो रही You've है। got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you... I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? मंथ पाइप क्लीनिंग डे, भाई हमारे यहाँ सफाई अभियान है, इनके यहाँ पे मंथ पाइप क्लीनिंग डे, द डे वी से गुड बाय टू फोर्ट्रेस। Ah, अच्छा yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't... Oh yeah, Paimon feels fond of this. Then be sure to come back. If you've signed the release papers, then you're free to go. You're not going to see us... I knew you'd ask. All right, sure. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. राइजली Ah, so you do Yeah. have a polite side. I चाय see. का बड़ा शौकीन है भाई। After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the... I hope you won't be here as convicts the next time I see. We'll do our Ah. best. Well, it seems our work in the बिल्कुल। Fortress of Mirabine is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Nervlev was the one who asked us to come, we should probably go report to him now. You're going to see Monsieur Nervillette? हाँ प्लीज Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will... विल डू। I believe it would be the polite thing to do. हाँ पोलाइट, इससे तो बात भी नहीं करके क्या I've उड़न heard से। the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed चाय by के the लिए इनवाइट administrative कर रहा फिर भी troubles. नहीं। हम्म, 114 होगी अभी तक। आएगा कंफर्म हो गई है, अरे फिर तो अपनी भी कंफर्म हो गया आएगा। एक अच्छी हीलर चाहिए यार मेरे को शार्लेट की जगह, लेकिन जब तक नहीं है ना, जब तक काम चलाना पड़ेगा उसका। वो ये एक सबसे अच्छी तो मेरे को जो लगती है अभी तक जो मैंने खेली है, स्टोरी में खेली थी ना, ये रही कोकोमी, बहुत सही लगती है यार, लगता है मरमरीड है, लॉट लाइक हीलर है ना ये। हेलो
हम्म 4 पॉइंट HP मतलब है तो हीलर ही है ना। हाँ स्किल डैमेज 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 मतलब इसकी ई में हीलर है। एक ये रही कोकोमी हैज 25% हीलिंग बोनस बट 100% डिक्रीज इन ए क्रिटिकल रेट। अरे भाई हाँ तो ठीक है। यार मेरे को से खेल के देखना है यार ये कैसी खेलती है कैसी है ये कैसी है भाई साहब। साकुरा इलेक्ट्रिक टाइप है भी मेरे को पता नहीं था। क्या मिला प्रीमो जेम्स मिली क्या। ये एवेंजर की धुन क्यों। अरे वाह एवेंजर ही चल रही भाई कुछ नहीं तो। मुझे एज ए हीलर शार्लेट को 80 तो रख लूँ ना मैं 90 तक नहीं ले जाऊंगा लेकिन 80 तो रख सकता हूँ। इसका मुझे कुछ काम भी नहीं होता बस स्विच वाला काम रहता है रोटेशन के लिए बस और क्या ज्यादा मदद तो नहीं करती है। शांगलिन करती ज्यादा मदद और पुरीना। पुरीना के साथ सही है उसका कॉम्बिनेशन एक हाइड्रो के साथ। The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Hmm. Apologies. Monsieur Neurvillet did say you'd be welcome at any. Excuse me. Would you mind helping me take a look at... I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a lot of... मिस आर्कोन के बारे में बहुत कुछ पता चला मैं। Hello. You've come at the कैसा वो right ढोंगी time, है। but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must. In the meantime, please have a seat. If you'd like to have some. That's all right. We just... Very well then. We just die। Take a break over there while we wait for him to finish his... अबे टाइपराइटर लेके बैठा है। All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede. And it appears that you've managed to complete all the released. That's right. And we came here to see you right away. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Not totally immersed। Oh, and is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Yes? What is it? Oh, right. Paimon, we asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. What? It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Boring game। Oh no. What about all the
हम्म Fortunately, the water levels only मेरे rose for a लिए short फर्स्ट period टाइम of है ना, time and have already returned to normal now. However, फर्स्ट I still मतलब have a bad feeling about the whole phenomenon. न्यू टू If the दिस change गेम in water यूनिवर्स, levels is connected with the leaking primordial यू कैन से seawater, दैट। then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check अच्छा on तुम्हें her. कितना टाइम हुआ है ऐसा ऐसे ही बताना। आपको कितना टाइम हुआ है जो भी है, I would also like to go there as बोलते soon हो as ध्यान नहीं दे possible, पाया। but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask और permission एंड to गेम go to प्लेयर, Poisson first. अरे वाह। I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. तो 1.5 ईयर्स तो मतलब आपको अच्छे से पता होगा स्टोरी क्या चल रही है, मतलब अभी तक, है ना? हाँ या ना? मेरे तो 3 साल होने वाला है। स्टोरी याद है मतलब किसी को इसका पूरा जो अभी तक है? हाँ, तो मेरा एक कंसर्न है, अभी तक जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो इसकी सिस्टर मिली नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे वंडरर ने उस ट्री, उसको नाम क्या था यार सुमेरु के अंदर, जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस ट्री का, जो एक और ट्री था, वहां जाके उसने उसकी याददाश्त मिटा दी थी, जिससे कि सारे ही जितने भी लोग जानते थे सिवाय ट्रेवलर के, तो सबकी यादों में से वो गायब हो गया था। तो एक तरीके से वो था ही नहीं मतलब। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी सिस्टर ने भी ऐसा कुछ किया हो जिससे कि सिर्फ इसको याद है और किसी को याद नहीं सिवाय वो डेनियल्स के। अब डेनियल्स ऐसा हो सकता है कि कार्निया का ही एक मतलब वहाँ का ही एक वो है नाइट, तो फाइट के दौरान या ऐसा कुछ हुआ हो कि वो भी साथ में हो, इसलिए उसकी याददाश्त नहीं की हो। लेकिन ट्रेवलर को ही याद है, बाकी किसी को भी याद नहीं। और वीडियो में नहीं, ऐसा नहीं है। शिट, एक्चुअली में ऐसा लगता है क्योंकि क्या है ना, इसकी सिस्टर फर्स्ट टाइम बीच में मिलती है डेनियल के साथ मिशन करते हुए, है ना? तो मेरे को नाम याद ढंग से लेना नहीं आ रहा डेनियल्स का। तब वो फाइट करता रहता, वो ऊपर से देखती रहती है किसी जगह से, तो वो यूं कहती है कि मैंने जो एक्सप्लोर किया है वो अब तुम करोगे, मतलब ऐसा कुछ बोलती है। और डेनियल भी ये बोलता है कि मैंने मतलब उसके साथ जर्नी की है ना? तो अगर जर्नी हुई है और उसने भी एक्सप्लोर किया है डेन स्लेप, अच्छा सॉरी माय बैड। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2 ही जने उसको जानते हैं पूरे गेम में? मतलब अभी तक नेवलेट के यहाँ तक पहुंचने से पहले सिर्फ 2 ही, जो मतलब अभी जब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो सिर्फ पूरे ही आर्कोन के अंदर सिर्फ डेंसलिव और यही क्यों जानते हैं उसको कि वो कैसी दिखती है, वो कौन है, जबकि उसने एक्सप्लोर कर रखा है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि पूरे गेम में उसे कोई नहीं जानता। द केजम वाली स्टोरी देखना, देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हाँ, वो टाइम स्टोरी की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वो नीचे स्टक हो जाते हैं जो। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा हो सकता है कि देखो वो जो वॉन्डरर की जो याददाश्त, मतलब जो क्या नाम है अपनी इसका आर्कोन का, नीदा ने एक डाटा सेव कर लिया था। इस वजह से वो डाटा को रिपीट करने की वजह से उन्हें याद आ गया कि वो कौन थे। अब उसने ऐसा बताया था वीडियो के अंदर, मतलब जब गेम चल रहा था स्टोरी में, कि ये डाटा तभी काम में लिया जा सकता है जब इस डाटा को एडवांस में सेव किया जा सके, तभी वो सबकी याददाश्त में से गायब होगा। अगर मैंने किसी का डाटा एडवांस में सेव ही नहीं किया और किसी ने जाके मेमोरी उड़ा दी सबके दिमाग में से, तो वो गायब ही हो गया ना एक तरीके से पर्सन। वो तो डाटा सेव होता है इस वजह से कैप्सूल के अंदर, तो जिस वजह से वो
वापस से वॉन्डरर की पूरी बैक स्टोरी देख पाए और निहिदा को भी याद आ गया कि वॉन्डरर कौन है वगैरह वगैरह। वरना वो तो वो कह रही थी कि वॉन्डरर कौन है, वो खुद ही नहीं जानती थी वॉन्डरर कौन है, भूल गई थी वो। उसने एक डाटा सेव करा था, मेरे को अच्छे से याद है। इससे पहले वही तो स्टोरी चल रही थी। हाँ, वो डाटा सेव होने की वजह से वो खुद ही ये बात बोलते कि डाटा सेव होने की वजह से हम एडवांस में डाटा सेव होने की वजह से वो उसकी याददाश्त को वापस से ला सके और देख भी सके कि क्या क्या हुआ था। अगर वो डाटा सेव नहीं होता, एडवांस में डाटा सेव नहीं करती प्रिकॉशन रखने की वजह से, तो वो एक तरीके से गायब हो जाता। हाँ बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ट्रेवलर और ये आया और उसका याददाश्त मिटा, मतलब सबके यहाँ से घुमा दी, तो किसी ने डाटा सेव ही नहीं करा होगा, तो किसी को याद भी नहीं रहा कि वो कौन है। और ये 500 साल पहले हुई थी बात है, जब नीदा को भी किडनैप किया था, किडनैप किया कर, हाँ किडनैप करके वहां रख लिया था। ऐसी थ्योरी तो है यार, नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसने एक्सप्लोर किया, उसने डेंस लिफ्ट के साथ मतलब जर्नी भी स्टार्ट करी और उसे कोई नहीं जानता। क्योंकि आर्कोन्स को तो जानना चाहिए ना, क्योंकि आर्कोन तो 500 ईयर से जिंदा है। बाकी चलो ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन तो जिंदा हो रहे मर रहे, जिंदा हो रहे मर रहे 500 ईयर से। बाकी उसको तो जानना चाहिए था। और उस विलन का क्या हुआ जो अभी तक भी नहीं दिखाया गया, जो उसने इसको क्यूब में डाला? वो खुद ही तो नहीं थी फ्यूचर से आई हुई। एक बार मुझे रिकेप करना पड़ेगा। और जो डॉक्टर फर्स्ट टाइम है ना निहिदा से टॉक करता है, तो वो बोलता है कि जितने भी सुमेरु है वो उसके निहिदा के नोसिस के बदले में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो वो कहता है कि ट्रेवलर का जो डाटा है वो तो मौजूद है, लेकिन ट्रेवलर की सिस्टर का डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि निहिदा उसको नोसिस इसलिए देती है क्या, ताकि ट्रेवलर और उसकी सिस्टर की इंफॉर्मेशन कुछ मिल सके। जबकि वो खुद ही ये बोलता है कि इसका डाटा मौजूद है। ये वन ऑफ द फोर्थ वो है ना, प्रिंस क्या है, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा कौन है। तायात, तायात के अंदर उसमें से एक तो काउंट किया जाता है इसको, ये 4th नंबर पे, और इसकी सिस्टर वो नहीं है। वो वाली स्टोरी रिकेप करूंगा ना, मुझे याद आ जाएगा अच्छे से। There's no time to lose. Let's get बोरिंग कर going. रहा हूँ ना, सॉरी। Please be careful. लोकेशन कौन सी थी वो? लोकेशन नहीं पता। स्टोरी की बात कर रहे हो ना? अच्छा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जो फर्स्ट टाइम वो जो डेंस लिफ्ट के साथ वो फर्स्ट टाइम ऊपर से देखती है, उसकी कह रहे हो क्या? उसकी पूछ रहे हो क्या? यही लोकेशन रहती है वो, यही कहीं वो डेंस लिफ्ट और वो है ना, कहीं गोले में कहीं फाइट कर रहे होते हैं, या तो ये गोला होगा, पता नहीं, या फिर ये होगा। फाइट कर रहे होते हैं, फिर ऊपर से वो देख लेती है इसकी सिस्टर और देख के चली जाती है। फिर ये उसको लगता है कि यार ऊपर कोई था, फिर ये ऊपर चढ़ के देखते हैं, जहाँ जहाँ टच करते हैं। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? वो डॉक्टर और नीरा की फर्स्ट मीटिंग, जिसके अंदर नोसिस के बदले में वो इंफॉर्मेशन लेती है उसकी। डॉक्टर, सुमेरु के अंदर ही, इससे पहले वाले पेज में, सॉरी पेज नहीं, ये अपन जब इसके अंदर रहते ना,
जब मिलने आते हैं अपन उसको आजाद करते हैं वंडरर को फर्स्ट टाइम हराने के बाद। अपन बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद एक ट्री आता है गुलाबी कलर का, जिसके अंदर नीदा रुकदवाता से मिलती है फर्स्ट टाइम। और रुकदवाता बोलती है कि तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगी तो फिर सबकी याददाश्त में से चल जाती है वो। लेकिन फिर वो है कि उस जितने भी लोगों को बीमारी होती है वो सब मिट जाती है, और सिर्फ ट्रेवलर को ही याद रहता है कि रुकदवाता कौन है। सिर्फ बाकी सब भूल जाते हैं उसको पूरी याददाश्त में से। फिर जब वो बाहर निकलते हैं उस जगह से, तब की बता रहा हूँ मैं। वंडरर को हराने के बाद की स्टोरी है। वंडरर को हराने के बाद आते हैं वो, तो लोकेशन नहीं आती, वो सिर्फ वंडरर को हराते हैं जो जन कौन सा डोमेन रहता है वो, मतलब एक स्पेस ऐसी जगह रहती है, फर्स्ट टाइम हराते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है स्टोरी। हाँ सुमेरु के अंदर आर्कोन क्वेस्ट ही था वो एक्चुअली में। फिर अपन रुका दबाता से मिल फर्स्ट टाइम मिलने के लिए जो अपन एक शिप पे चढ़ते हैं और शिप जनका ले जाती है अपन को उड़ाते उड़ाते। फिर वहां तक पहुंचते हैं, फिर वो लोकेशन ही अननोन रहती है। फिर वहां पे वो रुका दबाता से मिलती है, आपस में बातें बातें होती है और रोती है, उसकी जैसी दिखती है वो डुप्लीकेट। मतलब वो यूँ कहती है कि कोई भी आर्कोन यहाँ पे आएगी वगैरह तो मैं उसकी जैसे ही दिखूंगा, कोई अलग नहीं दिखेगी। वहां से निकलते हैं ना, निकलते ही ट्रेवलर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर पता नहीं ऐसा कौन सा पावर या जाने क्या यूज करता है, फिर वहां पे वो बेहोश होता है और पाइमोन भी बेहोश होता है, लेकिन नेदा जिंदा रहती, मतलब जगी रहती है। और डॉक्टर चलता चलता आता है। फिर वहां पे उनकी डील होती है पहली, और सॉरी वॉन्डरर से जो नोसिस लिया होता है वो इलेक्ट्रो आर्कोन का नोसिस होता है। उसके बदले में वो इन्फॉर्मेशन मांग फर्स्ट इलेक्ट्रो नोसिस के बदले में वो है ना डॉक्टर के सारे जो रूप होते हैं उन्हें डिलीट करने को बोलती है, डिस्ट्रॉय करने को। क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी 500 सालों से जिंदा है, ठीक है। हाँ वो जिंदा है 500 सालों से, और वो खुद कहता है कि मैं सुमेरु से चला गया था, लेकिन मैं असल में यहाँ पर भी हूँ और मैं चला भी गया हूँ। तो फिर यहाँ पे उसको शक होता है और यूं की नीरा को, और वो यूं पूछती है कि तुम मल्टीपल हो, मतलब ऐसा कुछ सवाल पूछती है कि तुम एक नहीं हो, तुम बहुत सारे हो ना। जो फिर उसके जवाब में ये यूं कहता है मे बी तुम्हारा शक सही है। तो फिर वो यूं कहती है कि तुम्हारा प्लान जो भी है बेकार। पहले ये सोचो वंडरर कौन है रियलिटी में, व्हाट द है। पूरी स्टोरी की ऐसी की तैसी Never करा। want to trade tactics. ये वंडरर कौन है, वंडरर किधर गया। हम्म, अरे बेलेडियर ही वॉन्डरर रहता है। वॉन्डरर उसका दूसरा रूप हो जाता है याददाश्त होने के बाद, जब वो खुद की वो याददाश्त मिटा देता है ट्री के अंदर जाने से। तो फिर सबकी याददाश्त हो जाती है कि सभी की, कि अब बेल्डवीर कौन है, बेल्डवीर कौन है, स्कार मोशे हो। हाँ तो उसकी याददाश्त होने के बाद फिर वो एक नए पर्सन से वापस से शुरुआत करता रहता है, और उसको खुद को भी नहीं पता था रहता कि वो कौन है। वो जीरो से शुरुआत करके एक अच्छे इंसान बन के उसका नाम वंडरर रख लेता है। मैंने उसका नाम क्या रखा था, शिबू रखा था उसका नाम मैंने। हाँ इससे नाम चेंज करते हैं, मैं भूल गया। नहीं कहीं पे है ना नाम चेंज करना। हम्म, It's hard to remain on. अरे इतनी स्टोरी तो मैंने ही फुली करी है।
रिलेशन क्या है, वो एक स्क्रॉल होता है। वॉन्डरर का रिलेशन क्या है? वॉन्डरर का कोई रिलेशन नहीं है, वो बंदा यहाँ अपन फिल्म बनाता है। वो डेंड्रो पाजी, मेरा साइनो का वेपन चेक करो जरा। बिल्कुल भाई। Dry land is so और सब चंगा? ये भाई तुम्हारी आईडी यूडीएम भेज दो ना ये। बाप रे। हम्म हम्म। क्या बात है यार। 44.1। हाय, तुमने बिल्डअप भी अच्छा कर रखा होगा फिर तो इसका। बहुत सही, बहुत ही सही। पता है ना साइना को बुल्ली करना इतना आसान नहीं है। कल ही मिला 68 पुल्स पे। अच्छा 68, मतलब 50-50 तो लॉस हो गया भाई। डर लगता है भाई 50-50 जब लॉस होता है। एक्चुअली में वेपन के लिए 2 बार करना पड़ता है। अटैक कम है। अटैक यार 111 है। उसने इधर इधर की तरफ आ रहा है ना थोड़ा। एलिमेंट और एनर्जी रिचार्ज की तरफ आ रहा है थोड़ा। अगर एलिमेंट जरूरी है तो एनर्जी रिचार्ज 120 तक कर लो और अटैक को बढ़ा लो, ऐसा कुछ जो भी सही लगे। डिड द वेपन पैसिव, द equipping vector can 25 to 52 of their element mastery as bonus attack when a skill hit upon a and for 10 seconds। अच्छा बोनस अटैक, फिर क्या बात है। 2K अटैक नहीं यार, चल जाता होगा। साइनो है बस उसके अल्टीमेट के टाइम के साथ, बाकी सपोर्ट नहीं कर पाते। अच्छा हाँ, क्योंकि उसके अल्टीमेट तो रहना पड़ता है ना ऑन फील्ड। 2K अटैक को चाहिए, 2K अटैक नहीं चाहिए होता है। साइनो वर्थलेस है। चैट में सारे नहीं कर देते हैं ना। मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें स्टोरी पता है, तुम्हें स्टोरी नहीं पता। मैं क्या लाइन से करता हुआ आ रहा हूँ ना यार, 1 महीना हुआ है, पता नहीं कौन है भाई। ठीक है कर लिया है भाई को भी। अचीवमेंट अभी तो मैंने अचीवमेंट टिकट नहीं करी है, इसको संडे के दिन ही करेंगे। टोटल अचीवमेंट 322 वट एवर। और ये कितना हो रहा है? हाँ ये भी खूब सारे हो रहे होंगे। हाँ एक दो दिनों से मिल जाएगी, छोड़ो। मैक्स डैमेज गलत बात है। मैं क्या 1 महीने से कंटिन्यू खेल रहा हूँ तो मुझे याद है कि स्टोरी स्टोरी क्या चल रही है, थोड़ा अच्छे से रियलाइज है। cold beer after a hard day's और मुझे work. लगता है कि याददाश्त तो मिटाएगी, कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा। आई मीन वंडरर एक टॉय है। हाँ वो एक पपेट तो है, लेकिन वो जिस कैरेक्टर के साथ फर्स्ट टाइम रहता है वो बेल्डवीर ऐसे कुछ नाम रहता है उसका, मेरे को ढंग से आ नहीं रहा नाम क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं वो। फिर वो जब सुमेरु के अंदर जाके एक ट्री के पास जाके नीदा उसको देखने के लिए बोलती है कि
इन्फॉर्मेशन निकालो ट्रेवलर रोज की, याददाश्त की वगैरह, तो वो इन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल के खुद सबके दिमाग से खुद की याददाश्त भी निकाल देता है कि खुद कौन है वो वंडरर, और निकाल देता। तो इंसान के दिमाग से अगर उसकी याददाश्त निकाल लो तो फिर मतलब उस पर्सन की तो फिर बचा ही क्या, और खुद के दिमाग से भी निकल जाती है। तो इन्हीं पपेट है। हाँ, तो फिर याददाश्त निकल गई, फिर वो नई शुरू से स्टार्ट करता है वॉन्डरर नाम रख के। तो उसका दूसरा नाम वॉन्डरर रहता है, जो कि ब्लू ड्रेस में रहता है, और पहला वाला पर्सन रेड ड्रेस में विलन के तौर पे जब रहता है वो। फिर वो जज नहीं कर पाता किसको चुने किसको नहीं चुने, फिर वो, अरे वही वही, हाँ वही। अच्छा तुम्हें पता है ना कि ये क्या नाम है इसका, केथ, केथरीन, वो भी पपेट है, ये तो पता होगा। केथरीन भी पपेट है, मतलब इन द गेम के अंदर भी पपेट है। तो मतलब टोटल 3 पपेटो है, एक तो रेडन अम्मा खुद है, एक वंडरर है और एक ये होगी, 3 पपीटा। प्रीटी रफ शेप। हाँ, यहाँ लड़ाई हुई क्या? पहले तो नहीं हुई थी। नोबडी अराउंड है। Navia नहीं should यार, be around here, डिसॉल्व थे। right? We need to make sure she's still. Paimon means we need to check on her. ये कौन हूँ? इसका वो पार्टनर, वो यहाँ थोड़ी ना होगा। मैं आता हूँ थोड़ी We haven't seen a टाइम single soul all देर the में, way here. अभी इसका लो। हाँ भाई, This is getting scary. Whatever do now? Look, there's someone on the roof. Just stay put. बिल्कुल। We're coming up. Watch your balance. अब यहाँ में टास्क करने को बोलेगा। अरे नहीं बोला। I'm not young anymore. How will I survive on my own? Oh, he looks pretty sad. My leg. विक्टिम, This have happened. It hurts. Just hang in there. Help is on the way. यहाँ हुआ क्या भाई? डिसॉल्व होने लग गया, लेकिन मैं क्या देख रहा था, हाँ कल संडे को बढ़ाएंगे इसको। संडे को नहीं, सैटरडे को, या फिर कल, कल फ्राइडे है, कल के दिन बना सकते हैं। कल के दिन बढ़ा देंगे इसको, अगर ये मेरी शार्लेट अपग्रेड होगी तो। शार्लेट भी ओटी की हो जाए बस। कितने 9 to 12 चाहिए ना इसको। एक बार में 2 भी मिलते, 3 भी मिलते। अगर 3 मिले तब भी 2 बार फाइट करनी पड़ेगी मेरे को इस विलेन से, और ये तो मैं कलेक्ट कर ही लूँगा। तो ये भी 80 हो जाएगी, बाकी सब 80 हो जाएंगे सिर्फ फुरीना को छोड़ के। फुरीना को किसी और दिन 80 कर लेगा। मेरे पास ऑलरेडी 4-5 प्लेयर हो जाएंगे। Hi, hey bro. Thank you for subscribe. It's Navia. Master She's all still in here. round. Hey, Navia, are you okay? नाविया, नाम ही भूल गया था मैं। बिक्स की गोली कहाँ है? We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. पोसों, Yes. ये थोड़ा As टोन में you can बोलते हैं ना। see, the water level suddenly rose. पोसों, It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here.
We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. कि 2 बंदे कहाँ हैं? He's बटलर। wounded? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know पहली where ऐसी to go. लड़की मिल गई जो वो ऐसा Understood. गेम I'll take इतने over the लंबे search and टाइम से rescue mission खेलते in हैं। the meantime. All कीप right. इट अप भाई You'll be द in charge. वरना खेलते हुए दिखते नहीं इतना लंबे टाइम से। I'm sorry. The situation in Poisson? क्या आप मुझे गाइड Ah, करेंगे? allow me to explain. नेवलेट का भाई मेरे पास खुद के पास नहीं है। A little earlier. मैं the खुद ही Kota आया का निकालना was चाहता हूँ, अभी तक निकाली नहीं मैंने। At first, everyone thought that something might इनमें have की आवाज flooded क्यों its कम होगी? waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The हेलो। rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. मैंने कभी Some people मतलब didn't realize the danger and thought it was just ordinary water. नेवलेट से taking नहीं full खेला अभी force. तक। Everyone on the street और who ना ही happened उससे to be close to the water didn't have a chance to escape. मेरे को भी नहीं As the पता water उसको levels बिल्ड क्या rose, करना they suddenly disappeared. और किस टाइप में यूज कर सकता हूँ उसको They were all जब dissolved. तक प्ले करके But नहीं those हैं। who realized what was happening started to flee दे in a ऑल panic, डिसॉल्व, सारे desperately बेगे पानी। trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some बाप रे। people fell from significant heights. बाप भाई The क्या Spina पानी भर Dirosula गया है। initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to भाई ये recede after 500 some में time, क्या हो गया? and the chaos came to an end. आयका The water that का flooded the area ही contained primordial बता दो seawater, भाई। so the lower levels of Poisson मुझे are खुद still को hazardous. एक To सेकंड चुप ensure हो। everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. थैंक यू। मेरे को खुद को आया का निकालनी है, मैंने भी अभी तक नहीं निकाली आया का, तो मेरे को खुद को आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे भी निकालनी है। और निकालूंगा ना तो गेम प्ले देखूंगा कि रोटेशन के लिए अच्छी है या फिर कैसी है, मतलब ये एक्सप्लोरिंग के लिए अच्छी है या क्या है। बट आई लव टू प्ले स्टाइल, मतलब उसका जो तरीका है वो मुझे काफी अच्छा लगता है प्ले करने का, फाइट करने का आयका का, इसलिए मुझे निकालनी है ताकि मुझे मतलब है। No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. हाँ यार, पानी It कहाँ was से आया quite वो? frightening indeed. I only wish that everything that Okay, just thanks. happened Bye, was bye, a bad brother. dream. Is there any way we can help Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really वो बहन की टकी can't आरकन तो नहीं आ express रही how यहाँ पे, grateful I am. और हम यहाँ पे बस देख रहे भी। पीपल आंट वी। Don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle, we've got a situation here. वो दोनों भी खो गया। I'll डिसॉल्व be हो गया। right there. Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be a while before she can... Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support भाई has just arrived, so I suppose नाविया I के साथ finally जो have a जो हो रहा है moment ना to वो बहुत focus on गलत है। my own matters. Of सॉरी course, इंटरनेट प्रॉब्लम। अरे we कोई should इश्यू नहीं remain है। ready for anything. अच्छा तुमने And सुना तो नहीं continue ना doing our best to rescue others. जो मैंने I'll be sure बोला? to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon,
would you two accompany me to my father's grave for a ऑफ moment? कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? Right now? दोस्त है। Navia, we are friend, you know. Thank you. इस लड़के के साथ जो हुआ ना यार, मतलब इसके फादर के, इसकी कहानी ऐसा किसी के साथ ना हो जाए। वाकई में जो नाविया की स्टोरी है ना, वो बहुत खूबसूरत है भाई। कहाँ जाना है? 200 मीटर दूर। आ गया क्या? अच्छा, और नहीं सुना, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। यो, क्या हाल है ब्रो? मंजूद भाई एकदम चंगा भाई। ये कंटिन्यू करने के लिए अच्छा है भाई, स्विच करके बकते रहो। 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना? बहुत सही है यार, बहुत A lot सैड of स्टोरी people है। here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon Poisson. doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? शुभिंग Navia, what's गलत wrong? बात। Sorry. अरे यार, I just... Maloose and Silver. They won't ever come back here again. अरे यार, What should I do, Papa? ये- Huh? What happened to them? नहीं, ये मत पूछे, बताने में और ज्यादा दर्द होता है। Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. भाई वो दिखाया नहीं गया सीन, लेकिन फिर भी बहुत बुरा लग रहा है सुन के। नेक्स्ट वन विल बी What should मोर, we do? इवन I've मोर एपिक। known them for so long. And I know they weren't afraid. भाई But इस लड़के के साथ जो हुआ I है ना, could at least hold मैं a होता funeral उस for वक्त my यार। father. And I know आई where he विश rests. ट्रेवलर को होना चाहिए था। As for Maloose and Silver, they're just gone. I just can't. भाई बहुत बुरा लग रहा। Everything looks so clean after it rains. क्यों दिखा रहे हो तुम ब्लैक Even एंड the व्हाइट में सालो? gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine and I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? how could Master ever be upset with you, demoiselle? Yet अरे the यार। cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop. I'm quite serious. That way, I'm quite we'll serious. save us both the trip to see each other whenever you यार visit ये your तो father's बहुत ही, grave. पहले मदर चल गई, फिर That बाप makes चल गया, sense. अब जो बॉडीगार्ड In था that वो भी चल case, गया। could I be buried on his other? After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill Personally? those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. ली All कोई right, यूट्यूब all से है right. क्या? I'll remember your तो मैं एक्सेप्ट request. कर लूंगा, But I'd नहीं really तो मैं prefer मेंशन कर not रहा to हूँ, talk about this stuff. मतलब And आर्कन। what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere.
somewhere. promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry गलत हुआ for यार. letting you see me in a mess like this. No, I no, don't ठीक usually है. cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd भाई always thought I could make my wishes यहाँ come बैठे true. बैठे मुझे फील हो गया कि क्या हुआ है. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so Lucas, sorry. thanks bro. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, बाप रे कितने सारे लोग. Vernie, Francine, Karina, Oh shit. Daisy Ray, Joinville, Julianne, Hassan, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. वो जो पानी भरने का जो रीजन है ना, मतलब जिसकी वजह से वो सारे डिसॉल्व हो गए, वो किसी ना किसी फतुई या फिर पता नहीं कौन है वो, जो भी है, लेकिन किसी न किसी इंसान की वजह से तो है वो. कोई ना कोई इंसान तो उसका रीजन होगा. आराम जाए. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was Heroes pretty just like amazing, Xiao brothers. I'll remember your words. Oh, Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Oh ho ho ho. uh, Oh ho the ho ho. knave? What are you... Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. तो जो इसने किया ना, मतलब इसने नहीं, वो जो व्हाइट कलर की लड़की है, Wait, इसने जो ये किया, एक यहाँ से लोगों को निकाला है, वो निवलेट का काम था या फिर आर्कोन का, जो भी है. We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui. अभी तक जैसा ही पता लगा था ये अच्छी लड़की है. Evacuation worked so quickly. The Knave. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area in any case. ये भी होने चाहिए थे यार, That पुल अप said, करने के लिए. I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I या फिर आएगी. apologize for all the She's ways an in Iron which Man. I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case.
As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, Don't be do fooled not by be troubled by this token of her our action. sincerity. Perhaps one मतलब day you'll कुछ तो also be able to सस्पिशियस help है me इसके in बारे the में, ऐसा same है way. जैसा तुमने बोला, उस हिसाब से जज कर रहा हूँ. Nation is a hand natural first step accomplished as the token says perhaps the day is also we will also be unable to help the same way. क्या बात है? Without your help, there would have been many more फायर टाइप है casualties. ये. अरे मेरे को पता ही नहीं था I इसका won't एलिमेंट forget फायर your है. kindness. इसका मतलब ये भी आएगी I फ्यूचर में. sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. They really You're become right. hero. I'm sorry for your loss, Miss Navia. They really. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such a... So, you're one who will try to change fate then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I Hotel? still have some things to take care of, and the children need my attention. सारे फ्रेंच है क्या ये? By the way, traveler, Paimon, one more thing. हाँ, of course. Yeah. Alright, then we'll just... हाँ. Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. हाँ, लास्ट टाइम की तरह. So, मेरे को भी ऐसा लगा था. Just 15 minutes more to end. अच्छा, इस quest का can listen to. You can listen to Sarah's line about the... हैं? ये कैसे है भाई? बढ़िया डेविल भाई. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. ये मैनिपुलेट भी करना चाहती है क्या मेरे को? साली क्या चाहती है? Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, अच्छा a अच्छा. child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging अच्छा. by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So, that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. क्या बात है? I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel
look kinda happy. The intel I just shared Why about the more? ruins could fetch a high price. बदलते हैं, बहुत तेजी But से since बदलता the हूँ. children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Nup? But are you sure you're up to exploring some ruins? Well, I'm sad, yes. But I can't just go back. And there's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must. Besides, I'm also doing this for myself. I need something. A distraction. To keep my mind off Malus and Silver. ठीक है, ठीक है, ठीक. कंपनी, हाँ वही तो. Since you put it that way, I have no objections. क्या बोलेगी What do you कंपनी? say, traveler? All right. चलो. The ruins are to the. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's. नो करने का तो ऑप्शन नहीं. वैसे चलो. ओ तेरी. बोला तो इतने प्यार आसान सा. How brilliant! Holy shit. फिर कभी. हो रहा ही तो है कुछ खास. So, are these the ruins the knave was talking about? They seem to be pretty ancient. Let's go in. Just be careful. Of course, we always careful. 21. हाइड्रो टाइप हुआ तो कोई पूरा प्लेन पे पानी फिर जाएगा. और कोई फ्रीज टाइप भी हो सकता है, तो फिर हीलर को भूल जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठीक है मेरा काम आ जाती है. एज ए हीलर यूज कर लूंगा अगर कोई हाइड्रो टाइप निकला तो. बाकी शिंगलिंग और ये तो कुछ समाइल ही नहीं तो. अबे तेरी भैंस की. Nice and spicy. ये दिक्कत है बस. Present. मारो हील करो, मारो हील करो. Watch it. The floor here isn't safe. एक सेकंड, वहाँ क्या है? जो भी है काम का नहीं है.
this place has also been contaminated by... Yeah. And a lot of it, too. पिछली बार हम गए थे Contaminant will most likely dissolve the सी moment वाटर we में, शायद fell हम in. मर जाएंगे या फिर Right. हेल्थ जाएगी. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be... don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. मेरे को इसको इन्वॉल्व करना है. That complicates things. In that case, do you want to wait... The water levels here are unstable. And I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us. Not good in hyper bloom. The show begins. Ah, Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. चढ़ना ही पड़ेगा क्या? गाजर मूली. ओके, गिरेगा यार. Wait, there's something wrong with this bridge. Run for it! हाँ, लग ही रहा था. पायमन हाथ पकड़ के खींच ले उसका. कहा था जल्दी. अरे नहीं यार, नहीं यार, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई. Demoiselle? हैं? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? बाप रे, मर गई क्या है? Maybe she just wants some time या to डिजोल्व herself. होगी Alice. पानी में. Oh, was I? Yes, it... That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. एक मिनट में आऊँ, किसी से मिलकर देखना. वह बाहर मिल गया, 2 मिनट में आता हूँ, ज्यादा नहीं. मेहमान हो रहे हैं यार, एक तो ये भी काम बेकार कर देते हैं कहीं.
Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the आ moment. गया भाई आ गया. Ah, right. Yes. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. No, it's nothing. और Why are there गेट so लगाइयो. few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, Demoiselle. We still have important things. Huh? We do? Well, now, did you... Miss Navia, here you are. I've been looking for... My trial? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time. Oh? Look, it's Navia! She's... And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people? And as for the judge... huh? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Nervalette... My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rasul. After you took over the not only you, but
मैं स्किप कर रहा we are हूँ, मैं one समझ गया race. क्या हुआ। Therefore, this. Oh. बताने की जरूरत नहीं है। I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the इसमें court कुछ गड़बड़ है, judge her मतलब ये now. वो लोग हैं जो She's डिसॉल्व हो चुका है guilty. पानी के अंदर। Stay here, Navia. You're one of us. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Schwanf. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof. Please do not mistake. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of... Even if Miss Navia only voluntarily rendered, everything is measured. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. And you would call this justice? Preposterous. Have you forgotten how much you all once wronged? Do you mean to defy? If your justice is flawed, then why should we... As you said, we can also have our own justice. Silver and I... And that is how we... My head... Demoiselle. Silver, it hurts. My head is... I remember now. Everything that seemed odd, Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid. And don't admit guilt. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the mature. Don't let them escape! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia. Silence. That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense, and cannot... The court will adjourn for the rest of the day. In this I... Our thanks, monsieur. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this... Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus... Silver... Quickly, you must come... Goodbye, demoiselle. Farewell. अब समझ में आ गया मुझे क्या चल रहा है। No, wait! Just a second! Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and... It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I think I saw two Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait! और वो सिल्वर और वो था। You mean like what happened with Vache? Perhaps those two Oceanids were the people you saw in your dream.
always told them that they अब didn't समझ have में to आई। protect me. To think मरने के that बाद they भी प्रोटेक्ट करना है, formed पानी के अंदर something डिसॉल्व हो after जाए death. वो दोनों बटलर। Please come with me. Neverlet, are you okay? Are you okay? Oh, I am quite all right. Why do you look so stiff all of it? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I really thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us a... I suppose so. Ah, Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the अच्छा fortress. चेट हुई क्या? He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neverlet, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were having the residents evacuate. They had Neverlet transported a sucks. large चुप हो जा। quantity of supplies to the area. पहले बहुत कुछ बोल चुका है तू। I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you. मैं पढ़ूंगा ही नहीं तेरी चेट You might पे। still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought पूरा you'd सस्पेंस की माँ मैंने कर देगा। नेवलेट आ गया यहाँ पे। I'm sorry to have kept you all waiting like that. Okay, I'm Rag. feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right, another one joins the flower. Let's get going. Propagate! Germinate! Scatter! May I present? मैं पढ़ूंगा ही नहीं तेरी चेट। मैं तो देख रहा हूँ कि तूने कुछ लिखा, ठीक है। बहुत खराब इंसान है भी तू। Oh no, another unstable path. Watch your step. लग गए बे, मेरा लग गए। हाँ, सांस भरने दो इसकी। और तेरी
हम्म, 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 Watch out! There are rats falling over here! हम्म। फिर खुल करके चलना पड़ेगा ना यार, तो पता नहीं क्या जरूरत आन पड़े। It seems we're almost at the top. Keep it up! अरे यार, भाई साहब आप भी उठ जाओ। Eyes on me! Eat this! Nice and spicy! Strike a pose! Boba, get them! हाय हाय, क्या मारा है बे, मजा आ गया, ऐसे मारना चाहिए पैंच। The show begins! Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the... The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in The surrounding walls also show... There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes.
Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing... And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Most likely due to us missing the first slate. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these... That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the record. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she... Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents... But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so... Yeah, we better get somewhere safe for now. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just... You still have energy for that, Navia? Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping... I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stones. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share... Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared. She has long been harboring secrets, and will not give them up easily. Which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably... I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. All right. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Ooh, desserts! Paimon's already starting to forget what happened today. Mona. Oh,
That voice. Is that who I think it... Huh? It's... Mona? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadter surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according... Nope. Although it is used by us in place of... Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your... I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. वाह कभी याद नहीं होगा. That's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice as great? That's so... petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. That sounds terrible! But anyway, you're not Montanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less... What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist?
Of course. The old hag could do it. And I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know that. Indeed. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need... Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Right, but we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our fun... Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Noveletza. Ad Astra Abbot. ए I am sorry. यार ये क्या बात होती है? डेली मिशन करने पड़ रहे हैं। मेरे को तो लगा स्टोरी से हो जाएंगे। वो ही नहीं। अच्छा, स्टोरी खत्म नहीं हुई पूरी। मेरे को डेली मिशन करना पड़ेगा यार। पता नहीं लंबी स्टोरी और कितनी खींचेगी। अरे यार, कितनी बार चढ़ना पड़ता है ऊपर। Give me a moment to compose myself. Time for afternoon tea. I guess the housework... Tactics. I'm always ready.
हम तुझको भी नहीं Wouldn't gliding be faster? स्नेह Zip on up! Surprise! Shower me with praise! Scatter! At the frying pan, it's Propagate! nice and spicy. Scatter! Boba, get them! मोटे वाले रुक जा तू आ Strike a pop! Scatter! At the frying pan, into the fire! इससे लग जाता है यार ये मौसम है Propagate! Boba, get them! Scatter! Strike a pop! Propagate! Nice and spicy! Here! At the frying pan, आह, बस बस बहुत है आज मैं इतने ही स्टोरी कर पाऊंगा यार मेहमान भी ना घर पे तो थोड़ा लंबा खींच नहीं सकता कल जरूर लंबा खींच सकता हूँ लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा आज के लिए बस इतना ही
बाकी कुछ है नहीं करने को। थैंक यू जो अभी तक बने रहे और अभी तक टिके रहे, देखा, एक्सपीरियंस बताया अपना जो भी है, उसके लिए थैंक यू। तो आज की स्ट्रीम यही ऑफ करते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा काम है को, कल थोड़ी सी देर, जब कल तो मैं थोड़ा लेट बैठूंगा, मतलब लेट तक बैठूंगा बैठूंगा वही 7:30 या 8 बजे तक, 8 बजे तक ऑनलाइन। बाय। अच्छा स्मार्ट गेमिंग, आई स्मार्ट गेमिंग, तुम देख रहे थे क्या? बाय ब्रो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय 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 बाय। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में। अपडेट आया हुआ है यार। ओ, चलो अपडेट मारते हैं।